Good morning, dear student. Now the question number third. In the last video, I told you question number second, first and second, and today I will tell you question number third of class 6, exercise 7A, and this is the second video of this exercise. So we write here part 2. Okay. Now the question number third is, write the total length of these 4 screws. Here 4 screws in your book. 4 screws here. Here 1, 2, 3, and 4. And the measure of the length of all 4 screws is T centimeter, T centimeter, T centimeter, and T centimeter. So dear children, in the question, write the total length. Write the total length of these 4 screws. So 4 times, so we write here 4 T centimeter. 4 T, because T is a unknown number, so we write here 4 T centimeter. Okay. Now question number second, write the total length of these nips. Here 2 nips, 1 and 2 nib. So the length of first nib is D centimeter and D centimeter. So what is the total length of these nibs? So 2 times, so we write here 2. This is a unknown number, so we write here 2D centimeter. Okay, this is your answer, 2D centimeter. Now question number 4. Question number 4, write the cost of each toffee. Dear children, here 4 toffees here. Suppose this is a toffee 1, 2, 3 and 4. And each toffee equal, write the cost of each toffee. Here the cost of 4 toffee equal X paise. The cost of 4 toffee, not 1 toffee. The cost of 4 toffees is X paise. Then what is the cost of 1 each toffee? Means each toffee के cost क्या होगी? So dear children, here the cost of 4 toffee is given here X paise. We find the cost of each toffee. So X upon 4 paise. Why we write X upon 4? Because when we find the each toffee, then we will be divide here. What will we do here? We will be divide here. So the cost of X 4 toffee is rupees X. And how many toffee? 4 toffee. So the cost of 1 toffee, each toffee equal X upon 4 paise. Okay. Now the next question, write the length of each equal part. Here this is a line segment, and what is the length of each equal part? Means the length of this part, this part, this part. How many parts? Yes, for 3 parts. One, two, three, and the length of these parts equal B meter. Equal B meter. So what is the length of each equal part? Suppose these parts are equal. So what is the length of each part? So how many parts? 3 parts. And total length of this part is B meter. So we write here B divided by 3 meter. B divided by 3 meter, because here on 3 parts, and the 3 parts, the length of 3 parts equal B meter. So B divided by 3. Okay, this is your answer. Okay, dear children. Now question number 5. Write each expression, write each verbal expression as an algebraic expression.
Now 3. Now the question is 3 more than t. 3 more than t. So 3 more than t. So 3 plus t. Okay. Now next question is c less d. C less d. So c minus d. y increase means आगे बढ़ना. तो आगे हम कब बढ़ते हैं? when we add means 5 plus 1 equals 6, 6 plus 1 equals 7. तो यहाँ पे हम क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. तो इंक्रीज हो रहे हैं. इंक्रीज कैसे होते हैं? जब हम प्लस करते हैं. सो y increase by 6. So y plus 6. y plus 6. Now the question number 4. m decrease by 8. m decrease by 8 equal. So decrease बोल रहा है यहाँ पे. इंक्रीज मीन्स बढ़ना. डिस्क्रीज मीन्स पीछे. तो पीछे का होंगे जब हम माइनस करेंगे. सो m minus 8. Now 5 time question is 5 times x. 5 times x means 5x. Suppose now 1/2 of x. 1/2 means x upon 2. x upon 2. X का half. So 1/2 of x. Now the sum of a and b. Sum of a and b equal a plus b. Now the product of 3 and q. So the product of 3 and q equal 3q. 3q. Now the quotient of y and 10. The quotient of y and 10 equal y upon 10. y upon 10. Now the last question is 2 less than m. 2 less than m. So m minus 2. Okay. Now the question number 5 is completed. Now the question number 2. Now question number 6. Same like the question number 5. Express each verbal expressions as algebraic expressions. So children, first question, 5 more than 3 times p with 5 more than 3 times p. So 5 plus 3p. So more than is ज्यादा. ज्यादा में क्या करेंगे? प्लस करेंगे. So 5 more than 3 times p. So 3 times p मतलब 3p equal 5 plus 3p. Now 1 less than 6 times n. 6 times n means 6n and minus 1 less than 6n means n 6 times 1 and 6 times. Okay. Now plus when we plus and plus how many 6? 6 times. So we write here 6n because n is the unknown number. Okay. Now the next question, 4 times the sum of y and 7. 4 times the sum of y and 7. Now look at it, children. Here, why we write here the bracket? हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लिखा? ब्रैकेट क्यों लगाया? सॉरी, ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्यों लगाया? Because 4 times, look at the question, 4 times किसका 4 टाइम? सम ऑफ y and 7. y and 7 का 4 टाइम्स. तो यदि हम ब्रैकेट के अंदर 4 करते थे तो किसी एक नंबर का वो हो जाता. जैसे 4y plus 7. ये जो 4 है ये सिर्फ
y का है, 7 का नहीं है। और ब्रैकेट के बाहर लिखने से ये दोनों का कहला गया। 4 जो है y एंड 7 दोनों का हो गया। तो जो सम है 4 टाइम्स सम है किसका, y एंड 7 का 4 टाइम्स है। सो वी राइट हियर 4 ब्रैकेट y प्लस 7। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल 2 plus 3, not 2. So 2 plus 3 equals 6 multiplied by 2. 2 6 is 12. But if we write here 2 multiply 2 plus 3, then 2 is 4 plus 3 equal 7. The value of this question 7 and the value of this question is 12. Okay, now the question number, yes, question number 30 is completed. Now the question number 4, 5 times the quantity n minutes 3. So 5 times, so 5n minus, yes, 5 times the quantity n minus 3. So 5n minus 3. So 25 discrete, 25 discrete means घटना. So what will we do here? साफ है जब हम discrete दिया तो माइनस करेंगे. So 25 discrete by 4 times e. So 25 minus 4 e. Now 6th question, take away the product of 15 and t from 60. Take away the product of 15, the product of 15 and t from 60. अच्छा, सो ये चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है टेक अवे हमें लेना है किससे, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड t के प्रोडक्ट से, फ्रॉम 60 से हमें लेना है इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट हमको 60 से लेना है। तो फ्रॉम लिखा है 60, इसलिए हमने 60 लिखा पहले, फिर माइनस प्रोडक्ट 15 t, क्योंकि t जो है अननोन नंबर है। यदि t सपोज t इक्वल 2 होता तब हम 15 into 2 इक्वल 30 लिखते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। सो वी राइट हियर 60 minus 15t. Now the question number B, question number 7. B discrete. Look at here, discrete here. So subtract करेंगे. B discrete by 1/2 c. 1/2 c किसका हाफ? c का 1/2, c का आधा। तो c का आधा B discrete B minus 1/2 c। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे c/2 भी लिख सकते थे, c का हाफ, बट 1/2 2 बोले हाफ c बोलता तो हम c/2 लिखते, लेकिन यहाँ पे 1/2 c। सो वी राइट हियर b minus 1/2 c. Now the question number 15, question number 8, 15 more than means ज्यादा कब आएगा जब हम प्लस करेंगे। सो 15 more than the quotient of d and 5. 15 more than the quotient of, किससे? quotient से ज्यादा। 15 more than किससे? quotient से। तो quotient कब आएगा? जब हम डिवाइड करेंगे किसको? quotient of d and 5, इन दोनों पे जो क्वाड्रेंट आएगा उसमें से 15 ज्यादा है। सो पहले हम क्वाड्रेंट निकालेंगे, तो क्वाड्रेंट कैसे आएगा? डिवाइड करेंगे। सो वी राइट हियर d/5। इसको हम डिवाइड तो कर नहीं सकते बिकॉज़ d इज अ नोन नंबर। सो d/5, जब हमें d का वैल्यू मालूम होगी तो d की जगह नंबर ले लेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसमें 15 को प्लस कर देंगे। इसीलिए हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा d/5 plus 50. Okay, now the dear children, this question number 6 is completed. Now the next question I will tell you in the next video. So thank you, have a nice day.